Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So as you can see on the screen, there is a written title on the top of your screen, that is web browsers. So here in the bottom of your page, as you can see, a lot of icons on your screen. So now in today's lesson we are going to learn what are web browsers and how many types of web browsers we have. So we all are using web browsers, but we are not aware what are web browsers and which one is one of the bestest web browser which is working now. So we will study introduction to the web browsers, then we will see what is Google Chrome, and then we will see Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari. We will study about 3 to 4 browsers, and then we will see which one is the best among all of them. So first of all, what is a web browser? So web browser is basically your application software. So I hope you all are aware what is your application software and what is your system software. आप सबको पता होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है. सो आप सबको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें, दैट इज़ नोन एज योर application software. So we are going to study today all the web browsers, that is basically your application software. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है. लाइक अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में हम क्या काम करेंगे? राइट, हम एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करेंगे. उसमें हम वीडियोस को, पिक्चर्स को एडिट नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करें जैसे मैंने किसी पिक्चर को एडिट करना है, सो अब वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं पिक्चर को एडिट कर सकूँगी. उसमें मैं कैलकुलेशन या एडिटिंग या टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकूँगी. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें, दैट आर नोन एज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Okay, so web browsers are basically your application software. It provides access to the web servers. Basically ये आपको access provide करते हैं कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्शन या लिंक क्रिएट कर सकें और आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. Brings information resources to the user. Like अगर आप इट इज़ अ बेसिकली काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिस पर आप जाएंगे और आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं. लाइक आप हर कोई वेब ब्राउज़र्स यूज़ कर रहा है जिसमें आप मल्टीपल उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे. अगर देखें, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ऑपरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी. सो अगर आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो सिंपली आप क्या करते हो? गूगल क्रोम पर जाके सर्च करते हो, राइट. सो गूगल क्रोम इज़ बेसिकली योर वेब ब्राउज़र जिस पे आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. सो ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू द यूज़र, और आप एक टॉपिक लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होंगे वेब सर्वर पर, वो आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है और कर देगा. सो रिट्राइव एंड प्रेजेंट एंड ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली जहाँ पर आपका सारा डाटा स्टोर होता है, दैट इज़ योर मेन वेब. सो यहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, दैट आर नोन एज योर वेब ब्राउज़र. लाइक आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, किसी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल फाइंड करनी है, सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउज़र. So here we have a list of web browsers. So here on the screen you can see the first one is Google Chrome. So can you tell me which icon is for Google Chrome? This or this or this? Right, this is for Google Chrome.
Then we have a Mozilla Firefox, and which icon is for Mozilla Firefox? Right, this one, the top one. Then we have Opera Mini, and which one is for Opera Mini? Right, this one is for Opera Mini. As you can see, O for Opera. Then we have Internet Explorer, and which one can be for Internet Explorer, this or this one? Right, this one is for Internet Explorer. And then at the end we have a Safari. So this is basically web browser, that is Safari, that is the icon of Safari web browser. So we have multiple web browsers, जिसमें से हम कुछ को स्टडी करेंगे, and then we will see what is the main difference between them. So first of all, let's see what is Google Chrome. So Google Chrome is developed by the company that is your Google, and as you can see, this is your language. So ये basically Google Chrome provides your data to your 50 languages. 50 languages में आपको जो भी सर्च है वो प्रोवाइड कर सकता है. आप इसमें गूगल क्रोम में अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं. लाइक अगर आपका थीम मोस्टली गूगल क्रोम में वाइट कलर का होता है, तो आप उस थीम को चेंज कर सकते हैं. देन न्यू टैब पेज, आप न्यू टैब्स या न्यू पेजेस इजीली उसमें ओपन कर सकते हैं. Then we have Omnibox, incognito mode. Then this is the main or plus advantage, that is secure, that is fast, simple and stable. इसमें ज़्यादा complications नहीं है, और या इस तरह नहीं है कि साइड पे बार बार एड्स पे एड्स चल रही हैं जिसको कैंसिल करने में काफ़ी टाइम लगता है. सिंपली आपने गूगल को ओपन किया, कोई भी चीज़ टाइप करें, और सिंपली जैसे ही आप यस करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ वैरायटी विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. और यहाँ पर बॉटम पे इन्होंने लैंग्वेजेस शो की हुई हैं कि किस लैंग्वेज में हमने डिज़ाइन किया है. सो गूगल क्रोम इज़ रिटन इन C++, assembly and JavaScript. So this is all about Google Chrome. So Google Chrome is basically fast to start up, fast to load images and safe browsing. Like इसमें आपका जो डाटा होता है वो एक तरह से सेव होता है. So as you can see, this is the interface of Google Chrome. So इसमें जो वाइट कलर की इमेजेस हैं, वाइट कलर का एरिया है, इसका जो आप थीम है वो चेंज कर सकते हैं. और ये ऑप्शन है कि आप न्यू टैब ले सकते हैं. आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप की, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं. देन व्हेन यू विल प्रेस एंटर, सो लॉट ऑफ वैरायटी विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. So this is very simple and the most important web browser, that is your Google Chrome. So मल्टीपल टैब्स की ऑप्शन है, और इसमें कहीं भी आपको एड्स की ऑप्शंस नहीं मिलेंगी या बारी बारी आपको एड्स कैंसिल करनी पड़े. सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेब ब्राउज़र. देन वी हैव Mozilla Firefox. Okay, so now we will start with the Mozilla Firefox. So Mozilla Firefox is also very used, and it is also very popular web browser. So as you can see, the developer of Mozilla Firefox is Mozilla Corporation, and the languages which are used in creating Mozilla Firefox, that are C++, C, JavaScript, CSS and XUL. So similarly, Mozilla Firefox also provides you text in 75 languages. This is also your private browsing, high security, tabbed browsing. That means you can open multiple tabs at a time, and high performance. The speed is also very good. So there is not any kind of your data leakage. So security is one of the most important element of Mozilla Firefox. So as you can see, this is the window of Mozilla Firefox. Simply what you will do, you can use this plus button to create multiple tabs, and you can run multiple pages at a time. And here you can search whatever you want, and there is not any kind of ads on the मेन पेज. लाइक इस पेज पे भी आपको इतनी ज़्यादा एड्स नहीं मिलेंगी कि आप बार बार उन्हें क्लोज करें, एंड इट विल टेक टू मच टाइम. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड वेब ब्राउज़र which I am also using right now. So basically Mozilla Firefox has a good speed and faster page loading. We can also change the themes, reopen closed tab. As you can see, the theme is right now white, so we can change into color. reopen close tab, और इसमें जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, तो जब दोबारा से हम
अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे शटडाउन के बाद, सो उसमें हमें वो ऑप्शन देगा कि आप जो ओल्ड टैब्स हैं, जो प्रीवियसली टैब्स हैं, क्या उन्हें दोबारा से रीस्टोर करना चाह रहे हैं या नहीं, या रीओपन करना चाह रहे हैं या नहीं। सो मोज़िला फायरफॉक्स में ये ऑप्शन भी हमें मिलेगी कि अगर हम प्रीवियसली क्लोज टैब को रीओपन करना चाहें देन वी कैन डू। डाउनलोड मैनेजर, इससे जो भी आप कोई वीडियो या कोई भी चीज़ डाउनलोड करोगे दैट इज़ good in speed and incremental find. You can search many things or relating to many topics. So after that we have one more popular web browser, that is your Opera. So Opera Mini is your software developed by Opera Software, and the language which is used in written Opera, that is C++, and it provides you text around about 45 languages. Speed is good, Opera link is good, so tab stacking is also good. That means you can run multiple tabs at a time. So this is a download manager जो load page without graphics, बट इसमें है कि जो आपके पेजेस हैं वो ग्राफिक्स के बगैर लोड होंगे, राइट। जैसे हमने पहले गूगल क्रोम को स्टडी किया, दैट इज़ वन ऑफ द टॉप लिस्ट। देन वी स्टडी मोज़िला फायरफॉक्स। फिर इसमें हमें एक ये ऑप्शन मिलेगी कि यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड ये अगर आप चाहें तो स्टोर करवा सकते हैं, सो दैट आपको वो दोबारा से रीट्राई या री एंटर ना करना पड़े। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द विंडो ऑफ ओपेरा मिनी, एंड you can search whatever you want. This will also provide you option of multiple tabs. After that we have one more web browser, that is Internet Explorer. So Internet Explorer, as you can see, this is the icon of Internet Explorer, and Internet Explorer is by default present in all the Windows, especially Windows 7. So this is developed by Microsoft Teams, and it converts your text into 33 languages. Search engine, search suggestions, it provides you search suggestion, better find on page, increased performance, smarter address bar. As you can see, this is the interface of Internet Explorer. So you can use it, but what I suggest you try to use Google Chrome as compared to Internet Explorer, because Google Chrome has a better speed as compared to Internet Explorer. And then at the end we have a Safari. So Safari is also a web browser, we can use it, and this is developed by Apple, and the language which is used is C++. इसमें आपको स्पेलिंग चेकिंग की ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक देन यू कैन करेक्ट इट। टैब्ड ब्राउजिंग, यू कैन ओपन मल्टीपल, यू कैन रन मल्टीपल टैब्स एट अ टाइम। टेक्स्ट सर्च, you can search the text with the by your voice or by your typing. And then pop-up ad blocking, अगर आप कोई ऐसी साइट ओपन करते हैं जिसमें एड्स वगैरह या वायरस के चांसेस हों, तो ये ऑटोमेटिकली उन एड्स को, जो पॉपअप एड्स होती हैं, उनको ब्लॉक कर देगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एडवांटेज ऑफ यूजिंग सफारी। So reader mode of viewing an uncluttered version of web articles. History view, we can view the history, and we can also disable images, like if you don't want. Then color profile sport, you can also change your color profile, and as you can see this is the interface of Safari. So you can use it if you are using for a computer iMac or for MacBook, then you can choose your desktop and then you can continue. So this is basically Safari window, it will provide you in multiple interfaces. So let's see कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी आपको स्पीड प्रोवाइड कर रहा है और कितना यूज़ हो रहा है। सो एज यू कैन सी दिस ब्लू एरिया कवर्स अ लॉट ऑफ uses. So because this is Internet Explorer, so it covers around about 44.72, because this is by default present in all the windows. Then we have Firefox. Firefox is also good in using. Then we have Chrome. Chrome is basically more used in mobiles. Then we have Safari, that is from Apple company. और then we have Opera Mini. और उसके बाद ये जो orange portion है, that is mobile browsers, जो कि हम mobiles में use कर रहे हैं, that are on 4.70. So what I suggest you, Google Chrome is the most popular and unusable browser in the world. Google Chrome.
So Google Chrome is one of the most unpopular and unusable browser in the world from 2011 to 2015. But now Google Chrome is working very good and it works very fast. The icons, or it does not show any kind of ads. So I suggest you try to use Google Chrome because it provides you good speed, good security, and pop-up ads will not appear on your screen. So just watch the video, and if you have any question then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp.